So beta, this is glass of water. Everybody here, छोड़ दो सब कुछ. This is glass of water and this is straw, right? When I put straw in the water, you know water is not coming out. कहीं से पानी बाहर नहीं आ रहा है, right? When I suck, only then the water is pulling upward, right? So water is pulling upwards. It is not pushing. There is nothing in the glass which is pushing the water upside, but it is only me who is pulling the water up, right? So likewise in plants, can you tell me what things are transported, which substances are transported? हमें पता है कि in case of animals, there is transport of gases, there is transport of waste, there is transport of minerals, food, water, right, salts, etc. बहुत सारी चीजों का transport होता है. Plants have simple organization. They don't transport many things. Can anybody tell me? हाँ जी, कौन बता रहा है? आर्यभट्ट, इलिशा. आर्यभट्ट, इलिशा. इलिशा is there? नहीं है, कोई बात नहीं. आर्यभट्ट में ही प्रणव. प्रणव is there? बेटा अगर ऐसे नहीं आओगे तो फिर मैं ऐसे ही बुलाऊंगी. If you don't come by name. Okay, who will tell me? Yes. Pranav is there? Yes, ma'am. Okay, Pranav. That's good. Pranav, which substances are transported in plants? Yes, Pranav. Ma'am, please repeat the question. Ma'am, please repeat the question. Okay. Which substances, name the substances which are transported in plants from one part of the plant to another part? मैडम को बताओ, मेरे को क्यों Pranav, water की food. Water and food. And there is one more thing, minerals, right? Yes. Okay. Is there any transport? Tell me. We have, in case of humans, there is transport of gases. Everybody here, बैठ जाओ बेटा. Archimedes, sit down. आप सुनो बेटा. So, in case of humans, oxygen is transported from lungs to different parts of the body. Carbon dioxide is also transported. Do gases transported in case of plants also, beta? Yes or no? मैम की तरफ मत देखो, सिर्फ स्क्रीन पे देखो और बताओ कि is there any transport of gases in plants? No, ma'am. नहीं, because every part, थोड़ी सी तो ट्रांसपोर्ट होती है. ऐसा तो नहीं हम कहते कि बिल्कुल ही नहीं है. थोड़ा सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट इज देयर, बट not much transport because every part of the plant it is capable of gaseous exchange. Roots अपना exchange कर रही है, स्टेम अपनी ऑक्सीजन ले रही है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है. इसी तरह लीव्स. बैठो बेटा. So in plants, which substances are transported? Water, minerals, and food, organic food, right? Yes. So for example, in case of animals, there is present special transporting fluid, that is blood, which flows in blood vessels. Yes. No, Euclides. Navroop, nahi, Euclides mein Harshit. Euclides, Harshit. Harshit is there? Harshit nahi hai Euclides mein? Okay, no problem. Mannat. Mannat is there? No. No. Euclides में है नहीं. आयुष. No worries, no worries. Euclides में बेटा मिडल रो में सबसे लास्ट में जो लड़का बैठा है राइट साइड में, यू का.
यस बेटा एक दो ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. I have very simple question. Like humans have blood vessels in which blood flows and transports substances. Name the, name the tube, name the structures in the plants which help in transport of substances. Name the structure. हाँ दोबारा से मैं बोल रही हूँ बेटा. Name the structure, name the pipes. है ना, जो बड़ी बड़ी पाइप्स है प्लांट्स में. Xylem. Xylem and Xylem. कीप इट डाउन xylem and phloem. Right. बिल्कुल ठीक है. बैठो बेटा. Xylem and phloem are there which helps in transport of substances. Right. So there is, xylem transport. You all know. इधर देखो बेटा. कॉपियां छोड़ दो, वर्कशीट छोड़ दो. छोड़ो वर्कशीट्स. Leave it. घर जाके करना. इजी सी वर्कशीट है ही कुछ नहीं है वर्कशीट में. Leave worksheet. So what I want to ask कि the xylem transports, sap. The xylem transports sap. What do you mean by sap? Sap, it comes from a Latin word. एक लैटिन में एक वर्ड होता था सेपे, SAPPA, सेपे, उससे वर्ड आया है सैप. यस, गॉज में रोल नंबर 7, गॉज रोल नंबर 7. What do you mean by sap? SAP. Have you ever heard about sap? Oh, ma'am. नहीं. Anybody from GAUS? Any other student from GAUS? आप बैठो बेटा. Any other student from GAUS who knows what is sap? Two words के मतलब मैं पूछूंगी. One is ascent. First, second, Anybody? अच्छा चलिए मैं बुला लेती हूँ. रोल नंबर 13. Come near mic. GAUS रोल नंबर 13. आ जाओ. Very good. Tell me the meaning of ascent. Ascending सुना बेटे? Ascending order, descending order. ठीक है. अगर मुझे एक चीज ये बताओ, अगर आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हो ऊपर की तरफ, इज इट ascending कि descending? Ascending. It is ascending. इससे मुझे टर्म बताओ, ascent का क्या मतलब है? ASCENT, ascent. इसी से रिलेटेड है बेटा. ascending से ही ascent बना है. And of food upward. फूड नहीं. ascent simple means upward transport. ठीक है. बैठो बेटा बैठो. है ना, जिसको नहीं पता वो लिख लो अपनी कॉपीज में, अपनी वर्कशीट में. ascent, the term ascent means upward transport. ठीक है. and who knows the term, meaning of the term sap? sap. Sepa. As I had told you, the word sap comes from a Latin language, sepa. Sepa means juice, right? उससे आया है प्लांट जूस का नाम उन्होंने कर दिया sap. Sap is a mixture of water and minerals. Write down what is sap. Sap is, everybody write down on your assignment. क्योंकि ऐसे तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट किस चीज का हो रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा. Sap, SAP, sap. It is Your voice is not audible. बेटे बाकी सबको सुन रही है. एवरीबडी सबको सुन रही है. हाथ खड़ा करो जल्दी से. यस. सो सैप मीन्स वाटर एंड मिनरल्स.
So there is a term, है ना, थोड़ा सा लिखना है अब आपने. There is a term that is called as ascent of sap. I had told you what do you mean by ascent, and I had told you the meaning of the word ascent and the sap. Now who will define ascent of sap? ब्रह्मगुप्त. ब्रह्मगुप्त में बेटा विंडोज की तरफ से लास्ट सेकंड बेंच पे जो विंडो वाली तरफ गर्ल है, कम ऑन, कम नियर द माइक. ब्रह्मगुप्त, क्विकली कम. Ascent means upward movement. Sap we means water and minerals. Tell me, what is the meaning of ascent of sap? Upward movement of water and minerals. Yes, it is upward movement of water and minerals. अब मुझे बेटा आपने ये बताना है कि कौन सा टिश्यू, ऑन करो बेटा, सेम गर्ल. Now, out of xylem and phloem, tell me which tissue in ascent of sap, water and minerals को ऊपर कौन लेके जाता है? Xylem की phloem? Xylem. Very good, very good. So everybody, note down what is ascent of sap. Upward movement या transport of water and minerals through xylem. Now compare sucking of water, है ना? तो जो मैं क्वेश्चन अब पूछ रही हूँ, there are two procedures of upward movement of water. You know where xylem and phloem are located? इधर देखो, अगर ये ट्री है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्री, तो उसके सेंटर में एक और, ये उसकी स्टेम है, उसके सेंटर में एक कॉलम है जिसमें xylem एंड phloem है. डू गेट मी? ये ट्री की स्टेम है, स्टेम के सेंटर में एक कॉलम है जिसमें xylem एंड phloem पड़े हुए. राइट, दे आर लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, इधर देखिए. सो there can be two mechanisms for the upward movement. It is, इधर देखो, यूक्लाइड्स, मिडल रो, फर्स्ट बॉय, सामने बेटा, छोड़ दे कॉपी, रजिस्टर छोड़ दे, सामने देख. दो चीजें हो सकती है, क्योंकि दिस इज वाटर या सैप इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी. नहीं तो हर चीज तो नीचे गिरती है, क्योंकि अर्थ हर चीज को खींचती है, ग्रेविटी. बट दिस इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी. हाउ इज इट पॉसिबल? या तो हम किसी चीज को ऊपर से धक्का दें, राइट, या तो दो चीजें हो सकती है कि आइदर समथिंग इज पुशिंग वाटर अपवर्ड्स एंड द सेकेंड इज someone is pulling water upwards. कोई पुल कर रहा है, या तो ऊपर को पुल कर रहा है, जैसे हम हम एक वेल से, कुएं से पानी खींचते हैं, पुलिंग करते हैं, या फिर कोई नीचे से धक्का देके ऊपर को भेज रहा है. देयर कैन बी टू मैकेनिज्म्स. कैन एनीबडी टेल मी? यस, हु विल टेल मी? फॉर्मेट में आ जाइए बेटा, रोल नंबर 23. हाँ जी बेटा, ऑन कीजिए. मैम बाय पुलिंग. बाय पुलिंग. कौन पुल कर रहा है बेटा? मैम लीव्स.
लीव्स कैसे पुल कर सकते हैं? Ma'am, leaves and the stem are filling because of the photosynthesis. They need water also. बेटा हम लीव्स नहीं पुल कर रहे, है ना, ये ध्यान रखना है आपकी बात। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हो, बैठो बेटा। It's not leaves which are pulling. It is the atmosphere which is pulling the plant which is pulling the water upward in the plant. How the atmosphere is pulling water? सबको पता है। छोड़ दो बेटा, वर्कशीट्स छोड़ दो। आर्किमिडीज छोड़ दो वर्कशीट्स, कुछ नहीं है वर्कशीट्स में, छोड़ो, इधर ध्यान दो। Right? So it is not the leaves, but it is the atmosphere which is pulling water in the plant. So how? Because क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमेशा प्लांट के कंपैरिजन में पानी कम होता है। एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज ड्राई, सिर्फ रेनी सीजन को छोड़कर। सीधे होके बैठो, ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे ऐसे लगता है सुस्ती छाई हुई है। सीधे होके, बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। पेन नीचे रख दो, पेन नहीं हमें चाहिए, जहां चाहिए होंगे आई विल टेल। लीव पेन, यूक्लाइड्स। बेटा सीधे होके बैठ, सुस्त नहीं ना डाल, सीधे होके बैठ, सीधे होके। ठीक है एवरीबडी है। सो इट इज द एटमॉस्फेयर विच इज पुलिंग, पुश नहीं हो सकता, इतने बड़े बड़े प्लांट्स है। देयर इज नो फोर्स इन द रूट which can push the water at such great heights. There can be pull, and which is pulling the water? It is atmosphere. How atmosphere pulls the water? लिखो जरा, ये क्वेश्चन लिखिए। How atmosphere pulls the water in plants? So answer is atmosphere is always more dry than inside of the plant. हमेशा सूखा होता है, उसके पास हमेशा पानी की कमी ही रहती है, सिर्फ रेनी सीजन को छोड़कर। एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज मोर ड्राई एज कंपेयर्ड टू द प्लांट। एटमॉस्फेयर हमेशा प्यासा है। therefore it pulls water from the leaves. Therefore it pulls water from the leaves through stomata. And everybody, tell me, this process is called as? Yes, Archimedes, last student, आजा बेटा, आजा, जल्दी से आजा, जल्दी से, भाग के. And this process is called as? दोबारा से बोल बेटा, दोबारा से. Transpiration. Yes, this process is called as transpiration. So there are two functions of transpiration. Who will tell me the two functions of transpiration? Yes, tell me. Raise your hands. Raise your hands from any other section. Format में. There is one girl. Yes, format. In the last. Come on. Give two functions of transpiration in plants. It keeps the plant cool. Yes. It's maintaining a role in the water cycle. It helps in, yes, दूसरा क्या है? Maintaining the role in water cycle. Or simply you can say it helps in ascent of sap. Right or not? So transpiration के दो functions है. It helps in cooling of the plant. It helps in ascent of sap. Ascent of sap आपको पता है, यहाँ से पानी गया, यहाँ पे कमी हो गई पानी की. It pulls water from the lower part of the stem. Then इस तरह से ये पानी को खींचता रहता है और धीरे धीरे सॉइल में से अंदर पानी आगे जाता है, ये आपको पता है.
You have to tell me now how transpiration cools the plant. कैसे कूलिंग करता है? जैसे हमारी स्वेटिंग हमें कूलिंग देती है, ऐसे ही ट्रांसपीरेशन भी कूलिंग करती है प्लांट में. बोथ प्रोसेसेस आर सेम. टेल मी हाउ. यस, रेज योर हैंड्स. Anybody who can tell me how transpiration cool the plant? कौन बताएगा? आर्यभट्ट. ये जो बेटा सेंटर में गर्ल बैठी है, हाँ जी बच्चे. द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन ए सेपरेट चेयर. आजा बेटा आजा. यस. हाँ जी. डू यू नो हाउ द ट्रांसपीरेशन कूल द प्लांट? Please repeat question. कैसे? Please repeat the question. मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन कूलिंग ऑफ प्लांट. डू यू नो द आंसर? Can we remove the water by storing it? Cool the plant. नहीं, ऐसा नहीं. ऐसा नहीं. Any other student who can tell? बैठो बेटा, बैठो बैठो, मैं बताती हूँ. Understand. Go to your seat. Let me explain to other students also. When we sweat, what happens? The sweat, हम पंखे के नीचे बैठते हैं, क्या होता है? The sweat evaporates. Lot of energy क्या है? लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है. ध्यान से इधर सुनो. ये कहीं अभी फिलहाल आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं, इसलिए सुन लो. क्या हो रहा है? जो हमारा पसीना है वो लिक्विड में है, ठीक है? उससे किस में चेंज हो रहा है? वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है. जब लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज होता है, यू नो, हीटिंग इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो लॉट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड to lot of heat from our body is used to convert sweat into vapor form, and when that heat is used, when that heat is lost, we get the cooling effect. Likewise transpiration. Write down question. लिखिए. how transpiration gives the cooling effect to the plant. So answer is, in transpiration, water is lost in the form of vapors. Vapors की form में lose होते हैं. Water is lost in the form of vapors. Lot of heat of the plant is consumed to change water into vapor form. This gives cooling effect. And one more concept before your English class, one more concept of this chapter. बाकी चीजें आप कर लोगे, ठीक है? But I want to tell you, xylem transport is एक मिनट बस. So xylem transport, write down.
xylem transport is unidirectional. Unidirectional, what do you mean by unidirectional? That it always moves from roots to upper parts of the plant. It is always, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं पानी आता है, हमेशा नीचे से ऊपर ही जाता है. It is always unidirectional. But this is crucial thing जो मैं बताने लगी हूं. Transport is bidirectional. And even in class 10th, when I ask this, but they say कि मैम ये लीफ है ना, ये स्टेम है, इस लीफ से खाना ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, दिस इज बायडायरेक्शनल. बट नो, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज बायडायरेक्शनल बिकॉज, ध्यान से देखना है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सोर्स क्या है, कहां से फूड आ रहा है, लीव्स में से. और बेटे सारे प्लांट में जाता है, बट सिंक मीन्स फूड स्टोर्ड. रूट्स ये कब है, ये स्प्रिंग सीजन में है, when there are lot of leaves. Source is leaves, sink is roots. इस तरह फूड नीचे की तरफ आ. Then in case of autumn, no leaves, पत्ते झड़ गए हैं, बट प्लांट तो है, राइट. सो हियर सोर्स क्या है, अब सोर्स है रूट्स. रूट्स के पास स्टोर्ड खाना है. एंड सिंक क्या है, अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. स्टेम है, ब्रांचेस है. तो दैट्स व्हाई, बिकॉज सोर्स एंड सिंक गेट्स रिवर्स्ड इन डिफरेंट सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम. दैट इज व्हाई फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट इज बाय डायरेक्शन. ठीक है बेटा, तो ये मेन चीजें मैंने आपको करानी थी. अगली बार मैं ये दोबारा से आपसे पूछूंगी. वी विल डिस्कस द असाइनमेंट, राइट. और मुझे सम स्टूडेंट टेल मी विच अदर चैप्टर इज कमिंग इन योर दैट योर यूनिट टेस्ट. कौन बता रहे हैं मुझे फॉर्मेट में? यस, मिडल रो में जो पहला बच्चा, मुझे जल्दी से बता दे.